last 3-4 years. I mean, I have been in management job for so many years. So basically, all you hold along, all you are doing is either critiquing the presentation or presenting, or doing something associated with it and talking about it. So that's why I'm used to this way. Okay, so what is this slide? Let me make it a presentation full mode if I can. Where is that one here? Can I do that? Well, now you can see it. Anyway, let's leave it like that. I was trying to make it more like a whole screen. That will be better if it is on the phone. Let's see, where is that? Background layout. Okay. All right, let's leave it. So, going back to the question, somebody asked on the net a few days back, जब हम लोग टेलीफोन पर बातचीत करते हैं तो हम लोग हेलो बोलते हैं एक दूसरे को, राइट? तो ये शब्द जो है हमारे अपने भारतीय संस्कृत का तो नहीं है, कहीं बाहर से आया हुआ है। और तो इसके बदले में अगर हम कोई भारतीय शब्द चुने तो कौन सा ऐसा शब्द है जो इसको रिप्लेस कर सकता है लोगों को? तो उसमें कई 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 उत्तर आए, जैसे कि नमस्ते। कुछ बोलने से पहले कोई फ़ोन आए तो आप नमस्ते एक दूसरे को बोलिए। कोई फ़ोन उठा रहे हैं तो फ़ोन उठाते वक्त में rather than saying hello, we say namaste. That was one of the most common answer in that survey. और और दूसरा मैं विचार कर रहा था कि हाउ कैन वी डू समथिंग विदाउट डिविएटिंग टू मच. That was my thinking process. So suddenly I was, we have been talking about vibhakti. I was telling you guys the other day, I'm learning right now grammar, Sanskrit grammar. So in the Sanskrit Vyakaran, you have प्रथमा द्वितीया से लेकर के अष्टमी विभक्ति तक। तो प्रथमा में हम बोलते हैं ना राम रामौ रामा, और वही चीज अष्टमी विभक्ति में हो जाता है, वो एड्रेसिंग का है। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, एड्रेस कर रहे हैं आप एक दूसरे को। आई थिंक देयर इज ए क्लियर वर्ड, क्या बोलते हैं, लोकेटिव। एंड लोकेटिव हो गया सप्तमी। Let me just give you the right word. सप्तमी संबोधन, हाँ, वोकेटिव। उसको अंग्रेजी में वोकेटिव बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबोधन, अष्टमी विभक्ति को। तो एक्चुअली जब हम लोग हेलो करते हैं एक दूसरे को तो दैट इज एक्चुअली संबोधन। और जब संबोधन कर रहे हैं तो हमारे संस्कृत व्याकरण के अनुसार हमें मिलता है, अगर प्रथम एक वचन है तो हे, अगर द्विवचन है तो तब भी है, और बहुवचन है तब भी है। तो तीनों में हम लोग उसको प्रयोग करते हैं, हे रामा, हे रामौ, हे रामा। तो मेरे दिमाग में आया कि जब हेलो के बदले में अगर हम लोग हे का प्रयोग करें तो ये कैसा रहेगा। ओके, सो this is just the wild thought I had, and I said, okay, I'll share with my team. So what do you guys think? Yes, sir. Which one you like better, namaste or hello? I mean, namaste or hey? Or none of these two? Sir, in my viewpoint, sir, we are not using lots of hey, na. So namaste, is it trending? So Namaste is trending. namaste is Yeah, namaste is also good. Namaste is also good. There is no doubt about it. And that is also a Sanskrit word. You know, it is a sandhi of. Uh, there are different ways you can. I have seen that sandhi. Namah is the one part, and asti could be the another one. Namah plus asti, namaste. Or astu could be another one, nama plus astu, namaste. There are different ways combination. So that's fine too. And it's a very neutral word. We can also use it for like goodbye as well as for greeting. So Sir, where we can use Hey Rama, Hey Rama, Hey Rama. It's a three
if we means I like During song, I think, Hey Rama. Yeah, sometime we get any problem. That time like we have to say, oh, three oh my person is God, very Hey Ram. Yes. Yeah. Oh my God, like you said. no no We say oh my god, and also we say each other hey. Sometimes we use, and I mean हमने देखा है कि कभी कभी हम लोग एक दूसरे को जब पुकारते हैं तो we call it hey, hey कहाँ हो तुम, right? yes yes Don't we use that? So it is coming from the ancient time. In our tradition it is part, it has become so ingredient in our culture that we say that one unnaturally, or automatically हमारे मुंह पे आ जाता है, तुम कहाँ हो, इतना देर से कहाँ गायब थे, right? yes So we use it. I like our habit. हाँ, राइट। और उसके बाद जाकर के जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत कुछ तो भूल गए हैं, लेकिन वो हमारे कल्चर में हो गया है। ना चाहते हुए भी हम उसको करते हैं, और भले ही हमें उसके बारे में जानकारी नहीं हो, तो इसलिए हे का प्रयोग है। लेकिन नमस्ते इज अनदर वर्ड, एंड आई एम फाइन फॉर बोथ। तो मैंने कहा आप लोगों को भी इसके बारे में देखते हैं कि आप लोग व्हाट यू गाइस थिंक। अच्छा, आपने ये ट्रेंडिंग कहाँ पे देखा? वेयर डू यू सी दिस ट्रेंडिंग थिंग? मे बी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। I just saw this on Facebook. Somebody was sending, but where did you see it trending? Is it also a discussion on Twitter or some other place you saw it? No sir, till now I have never seen this type of word. Means Ram, we know that the Sanskrit, I like Sanskrit grammar, Balka, Balku, Balka, Rama, Ramu, Rama, this type, but Hey Rama, Hey Rama, Hey Rama, these three words I never seen before, sir. Oh, okay. So basically, why we didn't see is that normally in the Vyakaran they teach only from Prathama to Saptami in Sanskrit Vyakaran. Yes, sir. Uh, and Astami is the what we call it vocative. So vocative is exactly like Prathama. So that's why normally there is no emphasis when they teach in the class. They teach right in the beginning. They will tell you one time that hey, and it is like you said, it's very rarely used. I think mostly it is used in literature and other places. I mean, that could be the reason, but but it is there in the background. So Panini, who is the scholar, most scholar, he just dropped it. He said that basically Yes, sir. you don't need to you learn it. I mean, you use it rarely, so but you can do it. So here I see my note. It says some संबोधन vocative, उसको अंग्रेजी में vocative बोलते हैं। Yes, sir. And what and when it is a direct address, when like one to one we are talking, जैसे अभी हम आपको बोलेंगे कि आप दोनों को कि है hey Arun, hey Pankaj. So it is a direct address. उसको vocative बोल रहे हैं। और note says when directly addressing someone. That's what is the इसका use. Okay. So it is there, but we don't have pretty good structure. I mean, sorry, good use of it because it's direct. It's mostly looks like more. It is more of a conversational word than the literature word, I guess. Okay, so that is on the side note. We I was trying to get some practice of how can I share some things quickly, and looks like to some extent I'm able to do it. So now I'll go back to YouTube, and let's see if anybody else had joined. No, Yes, yes, sir. who had joined? No, no, only Arun is joined, sir. Oh, okay. So let me see. Hello. Yes, Arun. I think Amarnath sir was joining with PC. They will join soon. Okay. Yes, He tries to join PC. yes, yes.
and it's a technology to, Which regarding he wants to just join? sorry, Which regarding he wants to just join? no, no, Amarnath sir joined with, I think, laptop, and they, He was using tablet. No, I think he was using tablet. I think they are using. No, he spoke. No, he was just using tablet before time just. So now he wants to just join another platform. It means another system like that laptop, maybe mobile. Yes. Actually, they want to share something, something. Yes. Yeah. So I don't know why I think I did a mistake. I was trying to either open or I was trying to drop YouTube in this tab of the meeting tab. Yes. And so I guess I'll have to keep practicing because sometimes I don't exactly know what to do. So let's see. You say that we'll do the window. Let's see what I see here. Okay. Okay. So maybe that's another way is that I should keep everything ready and then just click on the window. Yes, yes, So sir. That's a fine. Or first of all, we need to open, means whatever we want to share. First of all, we need yeah. to open. Then after, we need to share. Okay. All right. So now I'm sharing with you guys the Ars Bodhi Center, and here's the picture of Swamiji. So, as I said some time back, he was a computer engineer long time back in 60s and 70s, and then he left in 60s 70s. A lot of gurus started coming to this country, and he basically got a dikshit in Advait Vedant, and he has been uh, ever since. He left his worldly life and now he's a sannyasi. So let's see here. I will do full screen here. Home is here. There are, if you go, so remember Arts Bodhi Center. If you put it in on the YouTube, you will see the whole thing of this organization. And then the beauty of this is that he has, since he was a former engineer and English is his native language. Once he learned Sanskrit, he is not only lecturing, keeping intact what he has learned from his gurus. And I think Swami Dayanand was his guru. We'll see some of his pictures very soon when I go to the next screen. uh, but uh, many times Indians are not able to explain to American crowd uh, ideas, our ideas, especially complex ideas. So he has that advantage that he understands the psychology or unwritten behavior or unwritten languages, which helps in understanding a new topic, and he utilizes that by his expression and by his words and combination of the two, and explains very well, and that's how he's quite popular. And he has made so many videos. So let's see, I'll take you to here, uh, videos which you guys can see sometimes. So here is a different series. If you like the Gita, he has a lecture on Gita. Not only he has a lecture on Gita, he has translated Gita into English, and he's reciting like a Sanskrit meter. Dharma Kshetre, Kurukshetre, Sambhava Yutsava, and he has that one. So, and then of course he has lectures on that. He has lectures on so many topics. Advait Vedant is mainly, but right now this is Upadesh Sahasri is by Shankaracharya. Every Sunday he lectures on that. Whenever I go to only this lecture. And Saturday, like today, for 2 hours, 9 to 10, he leads what you call meditation dhyan. And for Gyan Marg, dhyan is important, so he leads that. And then on Sundays,
he does Upadesh Sahasri. Right now, these are the two topics is going on, but he has done several other topics in the past. So, like you can see the Upanishads. Oh, this is what I was telling you. This is his guru. Let's see. Open this one here. Okay. So here is the lineage. He is himself. Let me see if I can make it a little bigger. And then Shankaracharya is in the middle. You can see that. And then there are different gurus coming from Shankaracharya tradition all the way. His direct guru is Swami Dayanand, and Dayanand is he used to live in the he has ashram in, I think, Haridwar, but he is a scholar basically from the South India. He was born and raised in South India, and then he came in contact to Chinmayanand, and then he became his disciple. And then Chinmayanand asked him to go to Himalaya and learn all the Upanishads and Vedanta. And once he became a scholar, then he said that, okay, now you are going to go to West. So that's how Swami Dayanand came to this country. He has ashram not far away from here, a couple of hours from here. Parmeshwar Jha used to go there when his kids were growing up. He was telling me. So he knows him. That time he was Mark. His original name of Swami Tadatmanand is Mark. He was like married, uh, like we're talking about probably 30, 40 years back situation. He was married and then he got divorced. And then later on he took the sannyas after all that when she was. So his um, uh, direct guru is this is his direct guru's picture, and then I think there should be a picture also of his gurus. Let's see here if I can make the full screen visible. So yes, so here you see that in the center bottom, on the top is top center is Shankaracharya, and bottom center is Swami Dayanand, and in between Dayanand and Tadatmanand is Swami Dayanand's guru and picture. So these are other gurus. So this is the tradition they follow completely, the Advaita philosophy. So that's one thing I want to tell you. So I go there. I have not been able to go in last 1 month, and I feel bad about it. Something always comes up, and because I really miss that. And he is lecturing on different things. So I just wanted to go back here. Okay, I was hoping that I may not lose it. So if you guys have time, all you need to remember is that his name is Swami Tadatmanand, and then you can do it, all the so that's one thing. Now let's see one sloka from Bhagavad Gita, since we're talking about it. So, and then like I said, there there is no puja part. It's all the jnana. It's always good to listen from a native speaker of the language. So that's why I picked this topic. Yes, yes, sir. But sound is not coming, sir. Huh? Sound is not coming. I think it's a Google Meet problem with YouTube, I think. Say it again. What is not coming? Sound is not coming, sir. Sound is not coming. Yes, sir. Hmm. I Why think is that? due to
Google Meet and YouTube. I think it's Oh, something but it's copyright something. no, but they are the same company. Google owns both. Yeah. Okay, all right. So then you can listen to that some other time. But I Yes, thought yes, that yes, sure, sure, sir. we should be able to share it. So all right, I'll show you his other stuff there. So if you click on the playlist is, as you know, on one topic all the videos, right? Yes, So like if you like the Bhagavad Bhagavad, Gita. Yes, yes, yeah, like Panditji was saying that he was reciting Gita. So this is a perfect for this. yes, When yes, and sir. you know, you can, when you go to sleep, you can put it on for a couple of hours. It will go on the side of your on your computer. I do it many times, like I do with music, not with this one, but so all the chapters, and I never know when I sleep, but many times I have done this thing also, listen to this one. So you have so many topics by him. But Bhagavad Gita is, of course, number one. And then second thing I wanted you guys to study is listen to him is introduction to Advait Vedant. Yes, It sir. will completely change your thinking about religion. We always thought that in Hindu religion we are focused on Bhagwan and puja path and all that, and it is basically a treatment of suffering, Advait Vedant. That's what they are trying to tell us, and they are giving us the meditation and training such a way that the idea is that suffering is there. You cannot eliminate suffering, but if you understand the causes of suffering, then you can reconcile with the situation, and then pain will be little less. And then of course ultimately the desire is the biggest enemy, right? So they ask us to control the desire. Every religion is teaching that you have to put a stop to our desire. Is racing, it always wants more and more. I mean, there are two parts of it. As a physical what you call, with the modern business class or whatever you call it, materialistic society we are in, if you don't have I have asked this question myself several times. So if you don't have the desire, you are not going to produce anything, right? Yes, So this teaching is this teaching is telling you. So I was asking myself that this is very contradictory. But then the answer I got it, that while you are young, don't stop your desire like in 20s, 30s, 40s. But when you go in 50s, now it's time to start controlling it. yes, what do you what do you guys think about my this idea? yes, sir. Yeah. So first 50 years, do it. Whatever you want, desire, you pursue that, and make this world better, more mechanical, more scientific. But at the later part of the year, yeah, you should start cutting it down. For example, there is no need for me to go after a big house or a big car or big this and big that. Me and my Yes, wife, two of us are living, and what for? So it doesn't bring me any value that I when I can go, let's say for example, we are a Toyota fan, so in the family we have three cars here, two Corollas and one Camry, and we are very happy with that one because it lasts forever. And we buy and we drive it to the end until it dies. And Toyota Corolla lasts very long time, so it doesn't happen that easy. Like for example, my 2009 Corolla car, it still looks like I brought it from the store yesterday. It's so young, and it's so just all I do is that take it for the oil change and servicing, and it's running. It has about 90,000 miles, and probably it will go another 90,000 miles we can drive. So, point I was trying to make, that I have this basic car which is meeting my transportation, but you know, I can also have desire to forget about this. Why I don't have the three Mercedes, which will be like 10 times more expensive than this car, right?
So that is a kind of desire Yes, sir. which can be curbed, which can be curbed. So we should we should desire that we should have the things which we can use or it has a need. But then there is a another level of this that I mean, it becomes a luxury, what we call it. It's not really a need. You need a car, but if you say that I'm going to take a, for whatever cooks and cook, I don't need the basic car. I need to have the top of the line. Like right now, the India craze I hear is about the phone, right? iPhone. Everybody wants, what is that latest? iPhone 15? I think that's what is going on in India. Yes, yes, sir. Yeah, everybody's crazy. I mean, all phone are like, my gosh, I can do the job for you, but no, we don't want you. We want iPhone 15. So that is called controlling. That is called uncontrolled desire. We need to curb that one, and especially those who consider themselves intellectuals, because if you don't control them, then your energy is being wasted in pursuit of those things which you really don't need. So you are going in the wrong direction, basically, wrong way. Yes, sir. you you have seen on the roads sign that wrong way, like supposed to go one way. I mean, I don't know, here we have many times we see, I don't know, India is so crowded that we don't may not have it, but here it's quite common. You cannot narrow a street. Yeah, it's one street, another way, another street, like Banaras ki galiyan. Yes, So so curbing the desire is, so there are a lot of things here to see. And good thing about, like I said, is that you are listening, you are killing several birds. First thing is that he was an engineer, so he simply doesn't explain like any Indian monks who doesn't have any idea of the modern world. He has lived in that one. Yeah, yeah, he could have been my colleague, for example, because I was also in the same field which he was in. He was a hardware engineer, so a computer engineer, I and have so one question only. If we are Indian, yes, sir, well, I'm listening. and I think we have a lot of talented means Sanskrit or Bhagavad, every city means whatever we want. So why are we not trying to connect with him also? I like means globally. Yes, No, he is. His disciples are everywhere. That's what I was telling you. That all his classes, there are so many international students. Everybody, all the retirees. I mean, and his videos are very popular. A lot of people are watching videos all over the world. He makes, that's why he makes the video of his lectures, and that is being watched all over the world, including India. So he is well known in India in the philosophical circle. He's a very accomplished speaker. And if you go to his lectures, any lecture you pick, and then at the end you will see the comments, right? So read the comments. You will see the people from different culture, different countries, asking him question, good or bad or ugly, whatever it is, and he's answering them. So yes, so he has traveled widely in India. He has lived in different places, and yes, and as I said that, of course, mostly the disciples or the people who go to his ashram is um, Indians, but there are Americans too. But when it comes to his lectures, it is online, and so anybody can see it. So anybody who has interest, they can go and uh, yeah. I hope that answered your question. yes, 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 sir. Hmm. Yes, sir. Now Surender sir also joined. Good evening, Surender sir. It's too late. How are you, sir? Very good evening. Hello, good evening. Everything is okay, Surender sir? Sorry, sir. Yes, everything is okay. I'm going to in marriage party right Okay. now. Going to or coming from? No, I'm going to marriage party.
Till now you are traveling. I'm on the way. Oh yes, yes. This is called our So village marriage. Yes, Surendra sir. Yes, yes, After yes. A 12, village marriage 12 minutes. happened after 11. Yes. so what kind of food do you expect in Bariati today? What do you think they will feed you? I'm Yeah, more yeah. interested in. As like fast food, yeah, they would be there, and also Indian food, a variety of Indian food, I think. So please Yeah. share some pictures also, photos also. I have Yeah. not reached right No, now. no. I'm on the way now. Yes, yes. On WhatsApp It will me. take, I think, 1 hour more On to WhatsApp cover me. the distance. On WhatsApp me later. Yeah, Not yeah. now. Not now. I'll send. Please Okay. So I have a what you call a question for you about the Bariati. So you call in Hindi Bharat, we call it Bariati in Maithili. So हमारे यहाँ कहावत है मैथिली में कि बरियाती के 3 मन. Have you heard Pankaj this one? बरियाती के 3 मन. yes, I listened No? this sentence type. But what's the answer? I have no idea right now. Okay. Okay. So what are the man means like your mind, right? So Bharati, when you go, Bharati has Dulha and all these people, right? His friends, society, सब लोग होते हैं, माता पिता जो भी हो, माता तो नहीं होती हैं हमारे यहाँ, Yes, पिता yes, होते हैं और चाचा होते हैं, राइट? तो बरियाती का 3 मन. तो उसमें जो है पहले लड़का को लेते हैं. तो लड़का के दिल में क्या चल रहा है? yes, अब यह है कि बच्चे तीनों ट्रैवल कर रहे हैं, सब लोग फौज की तरह जा रहे हैं 25 गाड़ी में. एवरीबॉडी इज थिंकिंग. तो दुल्हा सोच रहा है कि भाई लड़की बढ़िया होनी चाहिए. दैट इज गोइंग ऑन. yes. कैसी होगी वो लड़की? Purpose of Bharati. Yes, sir. ना तो उसके दिमाग में लड़का इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. वो सोच रहा है कि भाई क्या सब लड़की बढ़िया होगी कि नहीं होगी, देखा नहीं है. बहुत सारे सवाल हो रहे हैं पर कैसी है क्या है. ओके, सो दैट्स गोइंग ऑन. एंड देन लड़का का बाप जो है, बर का पिता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में चल रहा है 2 चीज कि लड़की वाले हमारे सब हम लोगों को स्वागत कैसे करेंगे, कुछ दहेज वगैरह क्या देंगे वहां पे, अगर पहले से डील नहीं हुआ है, अचानक की बात है तो पता नहीं, वो भी चलेगा, क्या मिलेगा. और ये लोग बाराती लोग जो जा रहे हैं, मतलब वो जो है पूरा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सोच रहा है सब कुछ का, आगे पीछे का उसका दिमाग में वो चल रहा है. अब आइए बाराती पर, जो कि हम और आप लोग हैं. हम लोगों के दिमाग में क्या चलता है बाराती में? अरे भाई, खाना पीना और स्वागत होना चाहिए. खाना अब तो हमने देखा है कि हमारे बिहार में लोग डिमांड करते हैं कि खाने के साथ साथ पीने की भी व्यवस्था होनी चाहिए. Yes, yes, sir. इतना नहीं गाना बजाना मिल जाए तो और अच्छी बात है. हार्ड लिकर एंड आई वाज शॉक्ड टू फाइंड, करीब करीब 8-10 साल पहले की बात है कि नॉट इवन लाइक इन द ऑर्डिनरी, इन द ब्राह्मण्स फैमिली दे एक्सपेक्ट. मैंने कहा क्या हो गया आपके संस्कार का भाई? आप लोग ब्राह्मण्स होकर के अब पीने पर उतर रहे हैं, और वो भी अब डिमांड करके. मांगना ही है तो पीना ही है तो पीजिए, अपने पैसे से पीजिए. भीख मांग के पीने की बात तो कोई बोला अरे भीख मांगना तो हम लोगों का कल्चर ही है ना. Yes, but not is wine. भीख मांगने का कल्चर है, वाइन तो नहीं है ना. हाँ, नहीं वो किसी ने मजाक Sir, में कहा कि not भीख. not a sir, not a big. It is a, it means a viksha. भिक्षा, राइट. भिक्षा, राइट. तो नहीं, अब वो ना वो उसको बड़ा वो परिष्कृत करके बोला कि देखिए, हम लोग तो भिक्षा में भोजन, अन्न, उसमें अन्न और जल, अन्न और पान दोनों ही चाहिए ना. तो पान पहले जमाने में जल चलता था, अब जल नहीं चलेगा. अब जो है, आप जो है बना बनाया बढ़िया भोजन दीजिए, उसके साथ उसको गटकने के लिए पेय पदार्थ भी दीजिए. अब जैसे कि वो बोल रहे थे ना उस दिन, मलिक जी एक दिन बोल रहे थे कि वो जो गए तो एक दुकान में, उनके बगल में दुकान में एक धोबी था. वो धोबी जो है वो जो काम करता था, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है, तुम क्यों करते हो ये सब? तो उसने बताया कि देखिए साहब, क्या है कि सरकार तो खाने पीने के लिए पूरा फैमिली के जितना हमको चाहिए दाना पानी सब दे देता है, अनाज और ये सब, तो वो तो चल जा रहा है.
लेकिन पीने का क्या करें? पीने का इंतज़ाम कहाँ से होगा? Yes, yes, तो yes. हाँ, तो पीने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। आप लोगों का कपड़ा धो रहे हैं, इससे जो पैसा बनता है, वो दिन भर यूनिवर्सिटी में थे, तो उससे जो है हमारा पीने का काम चल रहा है। तो ये है। All right, let's see if since we can talk about General Bharati. So yeah, that's another thing interesting. I have been pushing Apeksha and Akansha that you guys are missing classes from one party to another party, this that, and so I was kind of a little bit upset, and I said that they are in Delhi right now. That why don't you guys join? I want you guys to join today's Science Day at least. तो बोलती है कि वो हम जा रहे हैं किसी और के यहाँ कुछ ऐसा ही शादी अभी शादी ब्याह में कुछ कहीं पर जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक तो वो और दूसरा चीज़ ये है कि इंडिया में हर दिन कोई न कोई पर्व त्योहार ही रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग काम कब करते हैं इंडिया में। अभी आज बट बट सावित्री है, तो कल ये है, तो कल वो है। मतलब अपना हिंदू कम्युनिटी में भी कोई त्योहारों की कमी नहीं है, राइट? एक्सक्यूज की सालों कमी भर। नहीं है, एक्सक्यूज की हैं? एक्सक्यूज की कमी नहीं है Actually, सर. sir, especially for the women's only. Women's has always like fast having this day like Ekadashi birth Yeah. and other day have Brihaspati var birth. So this type of thinking going on with the women's of India. So Ah, I think अच्छा। ओके, गुड। तो यही सब our है तो culture is also every new work start with the like festival. When हुँ, like Akshay Tritiya is started for the farmers, farmer starting their farming with the like festival started Akshay Tritiya. तो या हमारे यहाँ कल्चर है कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो फेस्टिवल के साथ में। Do you know, Surendra राइट, sir? In our village, we see that a lot of ladies and gents never eat before, means they wake up early morning, then after fresh, they worship a few Yes, minutes yes, or yes. a few hours. Then Actually, without before worshipping, they do not want to have anything. Even water yes, they cannot have. yes. So this is our also sanskar, Amarnath sir. हुँ। Now tell me one thing, is this, I mean, I can understand that upper middle class, from any community can afford it, but what about the common ladies? They can afford all these festivals, they can manage it? Is it celebrated in everybody's house, or it is just in the upper class like Brahman, Rajput, caste, पैसे वाले वैश्य, है in their families तुम्हारी only? बंद करो लल्ला. Like for example, right? I saw yesterday a lot of pictures on Bhat Savitri. Does it happen to like everybody celebrate? All the ladies celebrate, or it's only like upper caste Hindu ladies? No, in my village area, sir, every woman celebrated celebrates. Oh, okay, Yes, sir. that's good then. At least, yeah. Yes, sir. I like Chhat Puja. Chhat Puja is also celebrated by every people. Doesn't matter what the caste. Means, Yeah. yes, in my village area. So this is really very good. In that time, it's a really village festival. True. Yeah, that was good few years, like 30, 40 years back Actually, when. Chhat Puja is spreading throughout the world. Uh, Bihar has given one thing that is Chhat Puja and Liti Chokha to the world. Yes. Yes. All right. Hey, you have not really given good honor to Bihar. You forgot that Bihar has given Lalu Prasad too. Yes, 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 sir. I And I, like forget. Sarvaha Vidyalaya. yeah, I tell I tell you how lowly he has made Bihar. So in Sanskrit there is a lot of contribution from Mithila scholars.
Maithil Brahmins, Jha, Upadhyay, Mishra, Thakur, blah blah blah. From the ancient time, right, it has always remained the center of learning. And of course, Banaras was the kind of, you can call the epicenter. मिथिला के विद्वान सब जो है, they were highly uh, influenced and collaborative with Banaras. So basically, you can call it that, from Banaras to all the way, Prayag to all the way, that was a kind of Saraswati Kshetra, right, to Mithila. And uh, uh, and so let's see what thought process I had, what I was trying to tell you guys. See, I'm getting old. My thought process, what we were talking about. Oh yes, Lalu Prasad, right? Yes, sir. So basically, like, there is a Mithila Mahat. There are so many. If you take the Puranas, you have oldest Purana is Brihadaranyaka uh, Purana or Upanishad. You can see that there is a lot of mention of Mithila. Like, it tells you geography, it tells you river, everything is there. I have all the slokas of that from those. Because I use this, I am also a Mithila state activist, for you guys to know. So ऐसे ना it is well known in ancient world, or in जब हम Sanskrit पढ़ा रहे हैं ना तभी हमारे Pandit world, is very well known. कैसे पढ़ा चुके हैं बाप रे बाप But then in the modern हम लोग time, काम करके forget about all those. Now we have a Lalu age, कोई है right? It's not जिसका anymore age of Rama or Krishna. It's Lalu age, right? So everybody knows for नौ बजे 35 कोई ना years, Lalu has been क्या ना ये नौ the real बजे ruler of Bihar. Doesn't matter. Sometimes Nitish Kumar is there, but basically there is no difference between Lalu and Nitish Kumar. या पूरी People वाले have forgotten about the contribution of Mithila, which is North Bihar, and Lalu and Nitish Kumar is from the South Bihar, Bhojpuri and Maghi areas. And we three regions have been always fighting. Like, Mithila region has always been fighting uh, with uh, what you call Magad and Bhojpuri region. And one classic example of the thousand-year war is Hinduism and Buddhism, right? So Mithila Pandits working with the Banarsi Pandits, they were collectively working to defeat the Buddhist Pandit of Magad mainly. So as you know, Magad was completely, after Asoka become Buddhist, and so it was a huge fight, which they are fighting. So there are all these scholarly discussions are completely, you can call it, chronicled in the literature, right? So that's why people of India or even outside, they have high respect for word Mithila. When they say Mithila means it is a scholarly place where Saraswati lives, right? That's the image of ancient Mithila. Now, Lalu Prasad had destroyed that image. Now, लालू प्रसाद का इमेज क्या है? जब तक समोसा में आलू रहेगा, बिहार में लालू रहेगा, right? You have heard this one. Have you guys heard this thing before? Yes, Yes, yes. yes. Nara? Also. Actually, one one Bollywood song was very famous. जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगी तू मेरी सालू. This type of song, but this song was So commenting so 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 lalu. coming to this connection in America. So I had a family friend, Thakurji. He's a agriculture scientist. Of course, he's senior to me, so he's also retired. So he was telling me this story. When he went to, he's in California, and he's very social. He has been associating with many temples in this country. And so when they were building a temple, there, of course, there is more South Indians than North Indian, especially in California. So basically, it is a collaborative always project to build a temple. So when he started going there, as casual happens in the introductory meeting, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, तो मैं बिहार से हूँ. ओ लालू के यहाँ से हैं आप. You see how derogatory it was. लालू के यहाँ से हैं आप. अच्छा आइए बैठिए, जो भी है मीटिंग. So that's how it was. So image has been so much tarnished by, from Mithila to
When we say Mithila, it is a scholarly image. When we say Bihar, it is a derogatory Gali image, right? That's how it is. So uh, he said that then gradually he's a scholar of Sanskrit as well, and he knows a lot of literature, everything. So he started talking about them in an ancient contribution of Mithila, how things happen, like Janak and all those, to um, Bhamati, Shankaracharya, blah blah blah. तो तब उसी में से जो लोग उनको ये बोल रहे थे कि ओ आप लालू से हैं, जैसे आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मिथिला से हैं. so Yes, so sir. see the that is the difference. Actually, sir, Lalu always been a leader of only backward class. I Yeah. think he never been a leader of all the uh, forward class like. So No. once I have heard about that Lalu, uh, someone asked some one time, सर हमारे यहाँ रोड नहीं है बढ़िया बिहार में. कहा अरे बुर्बक, आपको रोड क्यों चाहिए, तुम्हें तो Yes. भैंस चराना है. रोड चले, रोड बनवा दें बड़े क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए, तुमको क्या करना है रोड का. Exactly. Yes, हमने भी सुना है. He always misguided the poor people and Yeah. wanted to rule over them. Okay. So let's see here. So I can tell you Amarnath, sir. I am writing articles. Oh yeah, is somebody there? I'm trying to share something else. Oh, Sure, sure. do you see something on the screen, or I have to? What do you see? No, sir. Still not see any screen, sir. You don't see any screen, but I hope that we have not dropped. Well, I can listen to you, so it means we are meeting. I'm afraid that I did something again to to disconnect maybe, or where is. Okay, so what I had written a article. I'll just summarize because anyway, I'll send you guys later. Basically, that's what I wanted to say. So basically, 1990, Lalu Prasad Yadav, he started campaign again against the Brahmins, as you all know, right? That because what happened that Bihar was being ruled from in 70s to early 80s by Brahmins. Like there were three chief ministers. Bindus, what was that? Bhagwat Azad, Bindusri Dubbe, then Jagannath Misra, Kedar Pandey. These are the. So basically, it was a kind of in the Congress Brahman period of the. Uh, and then, of course, it doesn't mean that they did anything about the Brahmins. So we always got the bad stick. Oh, ब्राह्मण लोगों का राज चल रहा है, ये है वो है. But hey, जैसे होता है, they might have benefited few families here and there, उनके आसपास के लोग, बट बाकी लोगों को तो कुछ नहीं मिलता है. तो वही चल रहा था वहां पर, राइट. तो उसके बाद लालू जब आया तो लालू ने जो है पूरा उसको ट्रांसफर कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, अब जो है बैकवर्ड का चलेगा. चलिए वहां तक ठीक है. उसने भी कुछ किया तो नहीं बैकवर्ड के लिए, अपना फैमिली के लिए किया है. लेकिन उसने दो काम जो किया वो बड़ा ही घटिया किया. वो क्या किया, उत्तर बिहार के लोग जनरली मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी से पूरब अगर आप चले जाइए तो सारे लोग मैथिली बोलते हैं. चंपारण, सारण, छपरा, ये सब जो है उत्तर बिहार का इलाका, वो सब भोजपुरी बोलता है. सब वहाँ की बोली भोजपुरी है. और ये चंपारण जो है वो हमेशा मिथिला का हिस्सा था, लेकिन अब अगर कल्चरली बात करें तो चूंकि अब ये भोजपुरी स्पीकिंग बन गया है, तो अब पता नहीं वो उसका क्या है. तो वो अपने आप को कहाँ मानते हैं, मिथिला का मानते हैं क्या पूर्वांचल मानते हैं, दिस अप टू देम. तो ये चल रहा है. इसके बारे में पंकज बताएंगे क्या है. लेकिन लालू पर आते हैं. तो लालू ने क्या किया, एक बड़ा चक्कर किया.
उसने कहा कि मैथिली, भोजपुरी और हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और मगही सब जो है हिंदी का अंग है, हिंदी की बोलियां हैं, और इसीलिए जो है मैथिली को जो भी प्रेफरेंस अभी तक मिलता रहा है वो गलत है, उसको हम काट देते हैं। तो था क्या प्रेफरेंस, यही था एक कि आप बीपीएससी में एज ए सब्जेक्ट आप उसको ले सकते थे, तो उसने उसको भी काट दिया। आप लोग सुन रहे हैं? आर यू गाइस लिसनिंग? Yes, yes, sir. एम आई ऑडिबल? Yes. ओके, ठीक है, जस्ट वांटेड टू कंफर्म। तो उसने जो है वो क्या किया कि उसको बीपीएससी से उसको निकाल दिया। हाँ, वही एक था। और उसके बाद हंगामा हुआ बिहार में, पूरा कोर्ट मुकदमा हुआ, हम लोग को भी अमेरिका में खबर हुआ यहाँ पर। तो हम जो है उस समय में यहीं पर न्यूयॉर्क में थे, काम करते थे। तो संजोग से क्या हुआ, ये 90 की बात है जब वो चीफ मिनिस्टर बना था, पहला दुष्कर्म उसने ये किया। अपना बैकवर्ड फॉरवर्ड की फीलिंग को हाईलाइट करने के लिए उसने क्या किया कि मैथिली जो है वो ब्राह्मणों की भाषा है। मतलब उसने क्या पिलाया, उत्तर बिहार के सारे लोग मैथिली बोलते हैं, लेकिन उसने घूंट बता दिया कि ये सिर्फ ब्राह्मण की भाषा है मैथिली, बाकी लोग, तुम लोग जो है मैथिली नहीं बोलते हो। और लोग मान भी गए उसके बात को 90 में। तो खैर ये हुआ। उसके बाद जाकर के 92 में वो आया था अमेरिका, तो बिहार एसोसिएशन की तरफ से उसको न्यू जर्सी में जहाँ हम अभी रह रहे हैं उसका रिसेप्शन दिया गया। एक ही बार आया है वो, मेरे ख्याल में पूरे बिहार का एक ही चीफ मिनिस्टर वही है जो एक बार आया, और तो कोई आया भी नहीं है। उन लोगों को वहीं से फुर्सत नहीं रहती है। तो खैर वो आया, तो जब जहाँ पर जिस होटल में रिसेप्शन था उसमें हम लोग भी पूरा मैथिली वाले सबके सब गए हुए थे, इसलिए कि हम लोग को खबर मिल गया था। वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर तो हम लोग को जेल में घुसा देता है, कुछ बोलिए उसके खिलाफ, तो बहुत ही गुंडा है वो, आप लोग अमेरिका में फ्री कंट्री में शायद आप लोग कुछ कर सकें। तो हमने यहाँ पर जितने भी ईस्ट कोस्ट में जितने भी लोग थे उन सबको ऑर्गेनाइज किया। परमेश्वर झा भी थे उसमें, जो आए हैं इस मीटिंग में वो भी थे। तो सब लोग हम लोग गए उस मीटिंग में, और आप लोग किसी को नहीं जानते हैं, परमेश्वर झा दोनों वाइफ एंड हस्बैंड आए हुए थे, हम लोग भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो करीब करीब 20-25 परिवार मैथिल फैमिली के रहे होंगे, और बिहारी लोग थे, यूपी के भी, ईस्टर्न यूपी के भी लोग थे। उसके बाद मैंने थोड़ा उनसे बहस किया, लालू प्रसाद से, कि आपने मैथिली को निकाल दिया है यूपीपीएससी से, इससे क्या क्या हमको उतना मालूम ही नहीं था, फिर भी मैंने जितना हमने सुना था वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मीटिंग करके उनको वो व्हाइट वॉश कर दिया कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत चालाक है बोलने में, हम लोगों को, हमारा कोई ऊपर से कुछ नहीं बोलता है, हमने, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हम तो सबको लेकर के चलना चाह रहे हैं, ए टू जेड लेकर के चलना चाहते हैं। तो ये उसका लैंग्वेज था। खैर यहाँ से वो कैलिफोर्निया में गया, तो जिनकी कहानी हम सुना रहे थे उन्होंने भी उसको वहाँ पर पकड़ा। तो 2 मीटिंग में जो है हम लोगों ने उसको लथाड़ा मैथिली के ऊपर में। यहाँ पर आया था, उसने भोजपुरी में ही बात करना शुरू किया था। ठीक है भाई, आप भोजपुरी बोलिए, हम लोग को कोई ये नहीं है। तो अब ये तो उस जमाने की बात हो गई, वो निकाल दिया। फिर कोर्ट में केस वेस चला, फिर जाकर के जो है वो बीपीएससी को रिस्टोर हुआ। लेकिन स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में मैथिली की पढ़ाई हो, इसके ऊपर जो है वो नहीं होने दिया वो। और वो अभी तक मामला पेंडिंग है। अब दोबारा क्या है कि ये जो है क्या हो रहा है कि बिहार में, बिहार की भाषा जो है वो लोगों ने कर दिया है कि भाई हिंदी ही एक भाषा है, और तो सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब हिंदी में होगी, टेस्ट एग्जाम जो भी देना है सब आप हिंदी में देंगे, और उसके बाद जाकर के बस होगा। अच्छा, तो ठीक है, वो चलता, ऐसा ही चल रहा है। हुआ क्या इसके चलते कि अब हम आते हैं इसके डीपर पार्ट पर। तो अब इसका इम्पैक्ट हम बताएं कि क्या हुआ और अब इसका क्या स्थिति है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा जो हमको भी नहीं मालूम था। जब हम यहाँ पर, जब हम इंटेल में काम कर रहे थे, तो हमारा एक मैनेजमेंट रिव्यू था, हमारे बॉस के साथ होता ही रहता है जो था। तो होता है, वो बताता है कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं ठीक से कर रहे हैं। उसमें मुझे एक बात बताई कि आप जो है जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका एक डिले फैक्टर होता है। मतलब जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो कोई सुनते हैं जवाब किसी से, तो उसका तुरंत में आप जवाब नहीं दे पाते हैं, थोड़ा जैसे डिले होता है। तो उसने कहा कि इसके बारे में हमने पता किया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम तो है लेकिन आप बढ़िया से एक्सप्लेन
इमीडिएटली नहीं कर पाते हैं, उसको आपको टाइम लगता है समझने में, जो आप क्या सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये मेरा पर्सनल अपना हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हमको हमारे मैनेजर ने बताया। हाँ हाँ, तो हमने कहा कि तो फिर क्या है इसका, तो उसने कहा कि ठीक है, आप क्या करके जो है इसके लिए हम जो है आप, उसने हमको एक ट्रेनिंग सेशन के लिए बोला कि आप फलाना ट्रेनिंग कर लीजिए, वो जो था लैंग्विस्टिक कम्युनिकेशन वालों के पास। जब हम वहाँ गए तो उन लोगों ने, जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये नेचुरल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। अब आ जाइए यार, इस पर ध्यान दीजिए। उसने क्या हमको हाँ हाँ, उसने कहा कि देखिए, आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, आपकी नेटिव लैंग्वेज जो भी आपको इंडिया में आप बोलते हो, मैथिली हो, हिंदी हो, जो भी कोई भी हो, तमिल तेलुगु, वो आपकी नेटिव लैंग्वेज है। और यहाँ के लोगों की नेटिव लैंग्वेज क्या है? यहाँ के लोग, अमेरिका के लोगों की नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश। तो पहली तो ये बात समझिए कि आप एक फॉरेन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और फॉरेन लैंग्वेज में आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी अपनी नहीं है। अब ये तो हो गया जनरल होगा। अब आ जाइए इसका ब्रेन से इसका क्या रिलेशन है, न्यूरोलॉजी से इसका क्या रिलेशन है। तो न्यूरोलॉजी से इसका ये संबंध है कि आपका ब्रेन जो है, जब वो सुनता है कोई चीज, तो सुनने के बाद पहले वो आपका जो नेटिव लैंग्वेज होगा, जैसे हमारे केस में हमारा नेटिव लैंग्वेज मैथिली है, हिंदी तो हमारा नहीं है, मैथिली में हम लोग भले पढ़े हुए हैं। तो क्या होगा, आप चाहे हिंदी हो या भोजपुरी या मगही या बंगाली या इंग्लिश या फ्रेंच या संस्कृत, इसकी बात जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो क्या होता है कि पहले हमारा ब्रेन उसको कैसे प्रोसेस करता है, उसको पहला नंबर ट्रांसलेट करके हमको मैथिली में पूरा कम्युनिकेशन हमारे ब्रेन को देता है, समझाता है कि ये चीज आपको इनपुट मिल रहा है यहाँ पर। ब्रेन उसको तब कंप्रीहेंड, मैथिली उसको ब्रेन, हमारे ब्रेन के लिए सिर्फ मैथिली जो है वही मेन चीज है, उसी का लैंग्वेज है। सॉफ्टवेयर का बहुत सारे लैंग्वेज है ना, जावा है और ये है वो है, ऑलरेडी फीड अप है, ऑलरेडी फीड अप है, फॉर्मेट का ऑप्शन भी नहीं है, फॉर्मेट का ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, तो जो भी सर। समझ लीजिए, तो हमारी जो ब्रेन जो है उसको कंप्रीहेंड करती है अपने लैंग्वेज में, जो उसका मशीन लैंग्वेज है, वो मैथिली के माध्यम से उसको समझ में आता है बात। तो पहले उसने ट्रांसलेट करके मैथिली में हमारे ब्रेन में चेंज कर दिया, तब अब हमको हो गया, बात समझ में आ गया क्या है। अब हमको जवाब देना है, राइट, उस सवाल का। अब जब सवाल का हम जवाब देंगे, तब हम क्या करते हैं, फिर हम पहले मैथिली में उसको सोचते हैं, और मैथिली में सोचने के बाद हम वो इनपुट फिर अपने ब्रेन को देते हैं कि भाई हमारा ये करना है कम्युनिकेट। तो वो ब्रेन फिर उसको ट्रांसलेट कर देता है, या तो अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी में वो ट्रांसलेट कर रहा है उसको, हमारा ब्रेन मैथिली में सोच करके हम जो अभी बोल रहे हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, तब हम आपको वो चीज बता रहे हैं। उसी तरह जब हम इंग्लिश में मीटिंग में होते हैं या जहाँ भी होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, तो वो क्या होता है कि हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 बार ट्रांसलेशन हो रहा है। पहले हिंदी या इंग्लिश टू मैथिली, मैथिली एंड हिंदी में समझने के बाद फिर अगेन वन मोर ट्रांसलेशन फ्रॉम मैथिली टू इंग्लिश और हिंदी, तब जाकर के ये कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, अगर आप नेटिव हैं तो डायरेक्टली हो रहा है, आप बोले ये कम्युनिकेशन हो गया। 50% डिस्काउंट, हम लोग क्या लेते हैं, 50% डिस्काउंट मतलब मीन्स हो गया। इसी जो अमेरिका के और इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज जिनका है और जिनका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है सर, इन दोनों में देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, तो पहला चीज तो और चीज तो छोड़िए, अगर आप सीख के लिए कितना हाई लेवल पर, पहले तो आप पहुंची, एसिम्प्टोटिक होता है रिलेशनशिप, कभी भी आप परफेक्ट नेटिव लैंग्वेज तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। अगर आप 5-7 साल तक में छोटे बच्चे में अगर आए तो शायद हो जाता है, लेकिन अगर आप एडल्ट होकर के किसी दूसरे कल्चर में जाए तो कभी भी आप उसका नेटिव लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं 100%। जो दूसरे लोग कर सकते हैं नेटिव लैंग्वेज में, जितना कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं। ये नेचुरल लॉ है हमारे ब्रेन का, हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड है। तो आइए इसी बात पर, तो ये हुआ कि हम जो है, जब हम बोलते हैं तो हमारा ये डिले हो जाता है। अगर कोई 2 अमेरिकन आपस में बात कर रहा है तो उसकी बातचीत में जितना वो एक दूसरे को आंसर देने में टाइम लगेगा, उसके ब्रेन को, ऑफ कोर्स इट इज इन मिली सेकेंड व्हाटएवर इट इज लाइक। तो लेकिन अगर एक हिंदी, एक अंग्रेजी और एक मैथिली, चाहे एक चाइनीज बोलने वाला है, तो उसके कम्युनिकेशन में उसका डिले फैक्टर बढ़ता जाएगा।
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितना है। Yes, जैसे sir. And कोई yes, अगर sir. And People feel yes some like mistake or like this. yes, sir. या Yes, sir. अब देखिए, चूंकि अब एग्जाम्पल करते हैं आपको। जैसे सपोज करिए आप अभी किसी अमेरिकन से मिले हैं, हम किसी अमेरिकन से मिले हैं, तो हमारे और अमेरिकन के बीच में वो डिले फैक्टर इज लोअर कंपेयर टू डिले फैक्टर बिटवीन यू एंड ए अमेरिकन कन्वर्सेशन। आई बात समझ में? Yes, yes, sir. Yes, yes, हाँ, yes. क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपोज हैं, हमारा ब्रेन ने काफी कुछ सीख लिया है। Yes, sir. कल्चरल Yes, sir. बहुत सारे कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ वर्ड्स के नहीं होते हैं, वो कल्चर के अनस्पोकन लैंग्वेज होते हैं। आपके बिहेवियर, आपके खड़े होने का, आपके बोलने का, आपको आंख मिलाने का, देयर आर सो मेनी थिंग्स एसोसिएटेड विद द कम्युनिकेशन, राइट? तो Yes. हमने थोड़ा सीख लिया है और प्रोनाउंसिएशन ठीक किया है इतने सालों में, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमने क्या ठीक किया, हो गया है, बोलते 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 अपने आप, Yes, सुनते yes, sir. सुनते ये हो गया है, थोड़ा पॉलिश्ड हो गया है। तो इसीलिए आपको लगता है कि हम जो है थोड़ा अच्छा बोल लेते हैं, वो चक्कर नहीं है। वो चक्कर ये है कि नंबर ऑफ इयर्स आई हैव स्पेंट इन दिस कंट्री, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल बेटर देन यू। Yes, yes. लेकिन Yes, yes, डिले sir. फैक्टर डिले फैक्टर आपका भी है और मेरा भी है अमेरिकन के साथ कम्युनिकेशन करने में। और हमारा यही है कि उसका कम है। आपका अगर मान लीजिए 10 Yes, मिली सेकंड है, तो हमारा उसके बदले में 2 ही मिली सेकंड होगा। तो ये है। तो अब आ जाइए बैक टू बिहार की सिचुएशन पर। Yes, तो हमने इस yes, पर, sir. जब ये हमारे दिमाग में था, तो अभी हमने जब सोचना किया इसके बारे में, बहुत ये पहले की बात है, तो हम देखिए कहाँ की बात, हम कहाँ ले जा रहे हैं। तो अब आइए बिहार के कंटेक्स्ट में। तो बिहार में जब उसने मैथिली को निकाल दिया, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने दिया 90 में, जब During जबकि your kids time, Actually, was Maithili in was primary school, in sir. primary school, sir. In a मैथिली language, In a was language, with in a written, language written with language, not written only language, speaking. not only speaking. मैथिली was हमारे टाइम में भी जो है हाई स्कूल में यू कैन टेक एज ए सब्जेक्ट, बट इट वाज नॉट एज ए ABCD मीडियम like, नहीं था। ABCD like, it's like ABCD. as या like ABCD. हाँ, मीडियम नहीं था। मीडियम From इज starting वाज time, From sir. a स्टिल starting time, sir. From starting time, From a हाँ starting time from means starting time, from a यस starting यस time means till now, पहले no till school now no provided any school provided Maithili language. Maithili हाँ, languages. पहली क्लास से हम लोगों ने जो पढ़ाई की है वो हिंदी में किया है। तो लेकिन जो Language subject है. Language साइकोलॉजिस्ट, This is subject है. like This is subject है, I जैसे like subject संस्कृत, है. I like हिंदी. Sanskrit, Hindi. Maithili language Maithili language was was or yeah available right or now in available right now in yeah, it has always been education. available. education. So the difference is, देखिए, अगर देखिए जैसे बंगाली लड़का है, तो बंगाली लड़का क्या है, वो बचपन से घर में भी उसकी नेटिव लैंग्वेज मैथिली है। चाहे यूपी का लड़का है, उसकी घर की भाषा पांडे जी की और इन लोगों की भाषा हिंदी है। तो व्हेन ही गोज टू स्कूल, स्टडी करते हैं ये हिंदी में, तो इनके लिए बहुत ही नेचुरल है वो, चाहे यहाँ पर, क्योंकि वो अपने नेटिव लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, घर में भी वही है, उनके ब्रेन में भी वही है, स्कूल में भी वही है। लेकिन हमारे आपके साथ जो जो मिथिला के लड़के हैं फॉर एग्जांपल, तो उनकी लैंग्वेज तो हिंदी नहीं है। अच्छा, तो हिंदी नहीं है, तो हमारे लिए इसका डिसएडवांटेज हो जाता है लर्निंग करने में। तो हम क्या होता है कि जब हमारी हिंदी में ही जब हमको पढ़ाई जाती है बात, तो पहली बात तो होती है कि भाई हमारा पढ़ाने वाला भी आधा कौन होता है, उसकी भी हिंदी हिंदी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है। मिथिला का आदमी ही मतलब मास्टर होगा दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में। कोई लखनऊ से आकर के तो नहीं पढ़ाएगा, तो उसकी अपनी ही हिंदी आधी टूटी होती है टांग टूटी वाली हिंदी, राइट? तो लंगड़ा लूल्हा जो है, वो जब हम लोगों को पढ़ाना शुरू करता है, तो हम लोगों को सुपर लंगड़ा लूल्हा बना देता है। समझ गए बात मेरी? तो हाई स्कूल तक में तो अब So verbally it's means in village also, but not Subjective. subjective. Yes, या sir. तो मतलब दो चीज हम बोल रहे हैं कि एक चीज तो है कि आप जैसे हम जब बचपन में पढ़ते थे, तो घर में, गांव में, सब जगह मैथिली चलता था। ठीक है, और जब हम स्कूल जाते थे, तो स्कूल में मास्टर लोग भी जब आपस में बात करते थे तो मैथिली में करते थे। लेकिन Due to जब local पढ़ाने local की Due to बारी master. आती, local master. Due to local हाँ, master. Due to लोकल local मास्टर, master. All are हाँ local master. Yes, sir. हाँ, लोकल मास्टर थे। जब इंक्लूडिंग माय फादर, ही वाज आल्सो, हमको नहीं पढ़ाया, हमारे टाइम में वो हमारे मास्टर नहीं थे, लेकिन लेटर ऑन ही बिकम द मास्टर आल्सो, ही वाज ए टीचर। तो अब जब वो पढ़ा रहे हैं, वो लोग आपस में जब गप मार रहे हैं, वो लोग चाय पी रहे हैं, तो किस में कर रहे हैं, मैथिली में कर रहे हैं, लेकिन क्लास में जाके अब वो हिंदी में पढ़ा रहे हैं। जो भी हो, साइंस हो या मैथमेटिक्स हो या
विज्ञान हो या ज्योग्राफी हो, किस चीज में पढ़ा रहे हैं? हिंदी में पढ़ा रहे हैं, जबकि हिंदी अपनी उनकी भी भाषा नहीं है। हिंदी वो खुद भी, जब उसको अगर कोई यूपी वाला उनके हिंदी को सुने तो हंस देगा, क्योंकि वो टूटी फूटी हिंदी है, क्योंकि हिंदी तो उनकी भाषा है नहीं। उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ के मैट्रिक तक खींच खाच करके आईए तक बहुत होशियारी कर ली, तो बीए तक जाकर के अपना डिग्री ले लिया है और मास्टर बन गए हैं। नौकरी मिल जाए तो कौन पूछता है, बच्चे पढ़े ना पढ़े, ये तो बच्चे की है। तो ये हुआ। तो इसका दो डिसएडवांटेज हुआ। पहला चीज हुआ बच्चों को कि हमको अपने मीडियम में जब नहीं आप हमको पढ़ने देते हैं तो हम उसको ढंग से कंप्रीहेंड नहीं करते हैं। एक बात हो गई। तो अब जब अब आप इस लॉजिक को अगर आप समझ गए तो इसका क्या होता है कि अब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, मगही और भोजपुरी वाले का कहना है कि जिस तरह मगही और भोजपुरी हिंदी की एक बोली है, मैथिली भी एक हिंदी की बोली है, तो ये गलत है उनका कहना। हम नहीं सर, भोजपुरी का भी कोई ऐसा लैंग्वेज हम लोग भी सर, जैसे मुजफ्फरपुर या मोतिहारी में है, तो हम हाँ लोग भी अभी तक कोई ऐसा बुक नहीं देखे हैं सर कि जो भोजपुरी का है। मतलब हिंदी को ही हम ना, मतलब रउआ, ये सब टाइप, मतलब जो हाँ गांव के जो लैंग्वेज है सर, मीन्स हाँ ओनली ट्रांसलेट मीन्स रिटन नीडेड, बट हाँ बट हाँ तो लैंग्वेज इज लाइक हिंदी, बट राइट। डिफरेंट लैंग्वेज। हाँ मैं वही ना कह रहा है कि देखिए, भोजपुरी में कोई लिटरेचर Bhojpuri नहीं। is only speaking. Bhojpuri हाँ language is, I think, only for speaking, sir. एग्जैक्टली। तो भोजपुरी में कोई But लिटरेचर नहीं। Bhojpuri is like Hindi. हाँ एग्जैक्टली, तो वही कर रहे हैं कि भोजपुरी में But कोई Maithili language is different, sir. Because I मैथिली have no लैंग्वेज, idea to how to written Kha in Maithili language, sir. Yes, sir. राइट। Yes, नॉट sir. ओनली दैट, Yes, sir. मैथिली जो Yes, है, sir. मैथिली देखिए, फैमिली का जो इंडियन लैंग्वेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मैथिली, बंगाली, उड़िया और आसामी, ये चार एक फैमिली के लैंग्वेज हैं ईस्टर्न रीजन में। तो हमारी मैथिली जो है वो बंगाली से ज़्यादा मिलती है, आसामी से ज़्यादा मिलती है बनिस्पत की हिंदी से। तो ये हो गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड, भोजपुरी एंड मगही इज वेरी क्लोज टू हिंदी। और इसके कई कारण हैं, आई विल गो इनटू दैट वन सम अदर टाइम। तो दैट Sir, इज I think, डिफरेंट। sir, for this, as per my view, sir, if Bihar government is not support for Maithili language, so I think for in our constitution needed to, I like central rule for this type of language. Those language is very good, very nice, and it is day to day is देखिए, decreasing languages. So it I is think. not, yeah, it is not question of good or bad। No, no, हो not a क्या good रहा bad, no, है? not a good bad, not a good bad, sir. This is language, sir. I think in India it's our यस also या in rules institutions mentioned Maithili language also या in India. नो नहीं नहीं, हम पॉलिटिक्स की बात जो कर रहे हैं, हम बेसिकली हम इम्पैक्ट की भी बात कर रहे थे। इससे होता क्या है कि जब आप हिंदी में मैथिली वाले बच्चे को, जिनको ये भाषा मैथिली जो है, उसको उसको बचपन में आपको मैथिली में सिखाना चाहिए। अगर मैथिली में आप नहीं सिखाएंगे उसको, तो ये ट्रांसलेशन का दिमाग में चलता है। तो और दूसरा चीज, टीचर भी नहीं उनको सही हिंदी वाले मिल रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप अगर एक बंगाली लड़का के साथ, अगर एक बंगाली और मैथिली दोनों सिस्टर लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप दोनों को बैठा दें, तो बंगाली लड़का जितना जानता है किसी भी क्लास के किसी भी ग्रेड में, मैथिली बोलने वाला लड़का उसके साथ कम्पीट कहीं भी नहीं कर पाता है। क्योंकि उसको एक तो भाषा की कमजोरी हो गई कि उसको गलत दूसरे भाषा में उसको एजुकेशन दिया गया है। I like Marathi language, I like Gujarati language, I like Punjabi language. Maithili native language is available, but not in written provided by school. Yes, sir. हाँ हाँ It's also needed to in every primary school in एग्जैक्टली, दैट इज those व्हाट village, those district तो right पहले now हम act like Hindi language. तो पहले But हमको don't नहीं। know what's the reason, sir. नो, पॉलिटिक्स इज द रीजन, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग, दैट इज व्हाट आई एम No, कमिंग not टू। the Lalu Yadav and Nitish Kumar came in 19. Yes, sir. या But I want to talk regarding 1947, 1950, या 1960. सो या सो In इफ यू 1970, in that तो time, suppose, sir,
here is the answer for that one. Yes, yes, So yes, yes. basically, you have to go back that in Bihar in 1888, उर्दू पर्शियन टाइप ऑफ द मिक्स लैंग्वेज वाज द सरकारी लैंग्वेज, क्योंकि मुसलमानों का रूल चल रहा था, खिलजी और वगैरह Yes, वगैरह था। before Yes, British, before British, whole of हाँ India या whole was of India ruled by ruled या by हाँ, Mughal. तो उसने ये जो चल रहा था, तो उसने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, उसको हटा करके Yes, sir. उर्दू या क्या बोलते हैं, पर्शियन को हटा करके उसने Hindi. हिंदी को वहां का Hindi. बिहार का लैंग्वेज बना दिया। ठीक है। It's done by It's done by British means Muslim. या आई मीन 1888 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1888 1888. पूरे जब Okay. जब 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 अंग्रेजों ने उसको बिहार को कंट्रोल कर लिया, तो दे मेड हिंदी एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब सरकारी कामकाज में I आप like जो I है like I like I like national language. central So नेशनल, central interest for central only interest for Hindi only language in all Hindi over language India. in all over India. हाँ एग्जैक्टली। लेकिन हुआ क्या, तो बिहार का तो बना दिया, लेकिन उस वो जो था कि मतलब बिहार के जो राजे महाराजे थे, दे वर पेइंग टैक्सेस, और वो लोग बेसिकली इंडिपेंडेंट थे अपने अपने राज में, राइट। तो बिहार के राजा लोग जो थे, छोटे छोटे राजा थे, और वो लोग अपने स्टेट में इंडिपेंडेंट थे। तो जैसे मिथिला के राजा थे, उत्तर बिहार के राजा थे, दरभंगा के राजा थे मिथिला वाले, तो उनके यहाँ जो है वो मैथिली चलती थी, और मैथिली कैथी और पुरानी जो उसकी स्क्रिप्ट है तिरहुता, उसमें लिखी जाती थी। ठीक है, आपने देखा होगा स्क्रिप्ट, आपके घर में कहीं होगा पुराना कोई बुक, देखा है कभी तिरहुता का स्क्रिप्ट? नहीं लैंग्वेज नहीं, तो मतलब पुराना तब तक तो है, लेकिन कौन सा लैंग्वेज ध्यान पे नहीं है सकती राइट रहता। राइट। हाँ, तो मोटा मोटी ये हुआ कि उत्तर बिहार की जो भाषा थी, वो उस टाइम में जो मैथिली बोली जाती थी और जो लिखी जाती थी, वो आ, उसको तिरहुता बोलते हैं या मिथिलाक्षर बोलते हैं, जो देवनागरी के तरह ही है, लेकिन थोड़ा अलग है। मोस्ट लाइकली ये बोलिए उसको कि वो बंगाली से मिलता जुलता है, उसका पूरा कंप्लीटली बंगाली से मिलता है 99%। तो उसका स्क्रिप्ट है मैथिली का, ठीक है, प्राचीन मैथिली जी का। जी। लेकिन ओके। हुआ क्या, प्राचीन समय में वो स्क्रिप्ट चल रहा था, उसे जो है अब मिथिला के साथ मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब मिथिला के जो विद्वान हैं, वो जो है, वो जब संस्कृत का लिटरेचर लिखते हैं, तब वो देवनागरी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, और जब मैथिली का लिटरेचर लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो तिरहुता यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विद्यापति को लीजिए, विद्यापति 14वीं शताब्दी के महान कवि हुए हैं। वो सर। संस्कृत के भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, मतलब संस्कृत में भी उनका ढेर सारा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बहुत सारी किताबें संस्कृत में लिखी हुई हैं। और उन्होंने मतलब पदावली उनका मशहूर है, जो उस टाइम में जो ही इज कंटेम्प्रेरी ऑफ विद्यापति, इज कंटेम्प्रेरी ऑफ अमीर खुसरो। वो उधर जो है दिल्ली के साइड में अमीर खुसरो थे, वो जन कवि थे, और इधर विद्यापति थे। So विद्यापति was popular not only in the Bihar, but he was popular in Bihar, Assam, Bengal, and Odisha also, because there was no other Kavi at that time as powerful as he was. उन्होंने जो कविता रची, वो कविता के टक्कर की कोई लोकल भाषा में कविता थी ही नहीं, क्योंकि सब जो पढ़े लिखे लोग जो थे, या तो संस्कृत में कविता लिखते थे, या लिटरेचर लिखते थे, या नहीं लिखते थे। अगर आप संस्कृत में नहीं, जैसे आजकल है ना अपने यहाँ बिहारी में बोलते हैं कि भाई अगर हिंदी में नहीं लिखा तो क्या लिखा, राइट। तो दैट वाज द ट्रेंड। यस सर। इसलिए यस सर। सारे लिटरेरी विद्यापति को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उधर ईस्टर्न रीजन में मैथिली जो बिहार की लोक भाषा थी, उसमें लिखना शुरू कर दिया। एंड सो वी हैव ऑल हिज पोएट्रीज रिटन इन मिथिलाक्षर और तिरहुता, in Maithili, all the गीत्स we still sing, right? परम प्रिय पावन तिरहुत देश, उनका गीत लिखा हुआ है। चाहे जय जय भैरव असुर भयावनी, पिया मोर बालक हम तरुणी, these are the famous songs. There are hundreds of songs he has written, and this was written in 14th century, and it is continuing in the Maithili. That time even Hindi was not born when he wrote this poetry. आजकल की जो खड़ी बोली हम लोग बोलते हैं हिंदी में, it was not there. यस सर। तो anyway, that is a different topic. So आइए back to the बिहार। तो अब हुआ क्या, मतलब
ये जब लालू प्रसाद ने 90 में उसको बीपीएससी से निकाल दिया, पढ़ाई तो पहले से ही हिंदी में हो रही थी, दैट इज अनदर स्टोरी, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट पार्ट कि क्यों गलत वहीं से हो गया था जब पहली बार 1947 में मैथिली में पढ़ाई चालू नहीं की गई। दैट वाज द Yes, sir. गलत, That's the big, very big wrong बिग decision, sir. बिग मिस्टेक। Yes, sir. तो Big उसमें क्या mistake हो, by any, doesn't matter हमने central पहली government बार or Bihar government. हमने पहली बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा तब, जब, क्योंकि तब क्या हुआ, बंगाली बंगाली के बच्चे अपने बंगाली में पढ़ के बड़े हो रहे हैं, गुजराती के बच्चे गुजराती में बड़े हो रहे हैं, मराठी के बच्चे मराठी में, तमिल के तमिल में, और हम जो है हमारे बच्चे So right now, Mithila state demand by people is not a bad demand, sir. It's a या natural demand, sir. या It's a तो natural अब ये demand. हुआ, अब आइए लेट्स फोकस ऑन कि क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो लालू ने Yes, yes, क्या sir. किया, जब, लेट मी फिनिश दिस, ऑलमोस्ट गेटिंग लेट 1 o'clock। तो लालू ने क्या किया, जब उसको निकाल दिया बीपीएससी से, तो उसने कहा कि आप लोग जो है हिंदी में तो पढ़ ही रहे हैं स्कूल में, एग्जाम आप हिंदी में दीजिए, सब सब कुछ खाली हिंदी ही एक रहेगा, उसमें सब सब लड़के एग्जाम देंगे। तो अब होता क्या है कि जब देखिए उत्तर बिहार के जो लड़के हैं, मिथिला के लड़के जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे हिंदी में बीपीएससी का, सब चीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और एक मगहिया लड़का जाएगा मगध का, वो देगा, और एक भोजपुरी इलाके का लड़का देगा। तो नेचुरली है, चूंकि हिंद मगही और भोजपुरी हिंदी के ज़्यादा क्लोज में है, यदि वो उसको अलग भाषा माने तो वो लोग खुद अपने आप को कहते हैं कि भोजपुरी और मगही जो है हिंदी की एक बोली है और भाषा है। वो खुद मानते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं। हम लोग नहीं मानते हैं कि हम लोग हिंदी बोलते हैं। मैथिली वाले जो हैं वो कहते हैं हम लोग नहीं है हिंदी भाषी। वो अपने आप कहते हैं कि नहीं हम लोग हिंदी भाषी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब परीक्षा देने की बारी आती है, बीपीएससी या नौकरी के लिए, बिहार स्टेट दरोगा का हुआ, किरानी का हुआ नौकरी में, तो भोजपुरिया और मगहिया लोग अपनी नेटिव भाषा में निकल जाते हैं. Advantage. Yes, हाँ sir. एग्जाम Advantage of native language. हाँ, तो वो अपने नेटिव में परीक्षा दे रहे हैं, जबकि तिरहुतिया बच्चा जो है वो फॉरेन लैंग्वेज में परीक्षा दे रहा है। तो अब हो क्या, जब रिजल्ट आएगा, 100 मान लीजिए 100 विद्यार्थी कंप्लीट किया है, तो 100 में से 75 लड़का ऊपर से जो होगा, नंबर 1 से लेके 75 तक का जो मेरिट लिस्ट होगा, वो होगा या तो मगहिया होगा या भोजपुरिया होगा। नीचे का 15, 20, 25 लड़का कहाँ का होगा, तिरहुतिया का होगा, ठीक है, उत्तर बिहार का होगा। तो ये होगा। तो इसका इसका मतलब है, ये आपने ऐसा काट छांट शिकार कर दिया है कि जितने भी ऑफिसर बिहार के बन रहे हैं या किरानी की नौकरी मिल रही है, सब में ऑटोमेटिकली जो है तिरहुतिया को को उचित शेयर नहीं मिल रहा है। हम लोग पॉपुलेशन में तिरहुतिया जो है मोर देन 50% है, मगहिया और भोजपुरिया को मिला करके। लेकिन जब नौकरी पाते हैं तो मुश्किल से नौकरी का 10% मिलता है तिरहुतिया को, जितने भी ऑफिसर्स Sir, किरानी का। yes, sir. I understand, sir. And sir, that's why the reason, sir, I like in Karnataka and South states, people never try to speak Hindi language. या They enjoying. I like his native language. I like Kannada, या Tamil. हम्म, हम्म, अच्छा Yes, and direct to English. या तो They अब आ never try जाइए, to speak हाँ, in तो Hindi. अब आ जाइए कि अब लालू प्रसाद का कहना था कि हम जो ये कर रहे हैं, इससे हम ऊपर कास्ट के मैथिल ब्राह्मण कास्ट राजपूत को हम पछाड़ दे रहे हैं, ये उसकी भाषा है मैथिली, इसलिए उसको निकाल दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, इसका रिजल्ट, वो अंदर में वो जानता था इस बात को, इतना बेवकूफ नहीं है वो क्या किया कि उत्तर बिहार के जो ओबीसी और दलित लड़के थे, उनकी नौकरी उसने छीन करके भोजपुरिया ओबीसी, भोजपुरिया दलित, मगहिया ओबीसी, मगहिया दलित को बांट दिया। अब आ गई बात समझ में। जब सवर्ण जो Yes, है sir. ऊपर वाले हैं, जब उनको वो नहीं compete कर पा, तो हम लोग और आप लोग क्या करेंगे, जब जनरल कैटेगरी में ही ना compete करेंगे, जो 10% अभी दे दिया है या 15% या बाकी जो है। तो जनरल परसेंटेज में तो ठीक है, चलिए कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें भी हमको डिसएडवांटेज है, तो हम भी जो है मगहिया और भोजपुरिया से नीचे हमारी लिस्ट होती है, चलिए उसमें लड़ झगड़ के थोड़ा बहुत जो भी हुआ। लेकिन हम सवर्णों की पॉपुलेशन कितनी है, 15% है,
और हम लोग हाथ पैर मार के बिहार में कुछ नहीं मिला तो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, अमेरिका, इंग्लैंड जाकर कर लेते हैं। हमारा तो कोई ना कोई गुजारा हो जाता है सवर्णों का। लेकिन सबसे बड़ी मार खाई दलितों ने और ओबीसी वालों ने उत्तर बिहार की, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे। तो उनकी हिस्से वो जो वीडियो बन सकते थे, सीओ बन सकते थे, दरोगा बन सकते थे बैकवर्ड कोटा से या दलित कोटा से, वो सीट उनको नहीं मिला क्योंकि उनको वो कम्पीट ही नहीं कर पाए हिंदी मीडियम की परीक्षा में। वो कम्पीट कर गया कौन, ओबीसी कोटा से मगहिया और भोजपुरिया। तो इनके हिस्से की नौकरी जो थी वो छीन करके कहाँ चला गया, वो मगहिया और भोजपुरिया में चला गया। तो ये बात जो है ये लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ये हमने अभी 8-10 दिन में इसको चिंतन करके निकाला है रस साइंटिफिक ढंग से। तो अब जो है हम doesn't matter which caste, means, those people living in Mithilanchal areas, Mithila means, तो हुआ क्या कि लालू तो कहा सबको कि हमने ब्राह्मणों को पलटा मार दिया है, इससे उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन असली नुकसान किसका हुआ है, दलित लोगों का और ओबीसी लोगों का। कितने ग्वाले हो गए हैं नॉर्थ बिहार के, आपके मुजफ्फरपुर, हमारे मधुबनी, दरभंगा या उधर पूर्णिया के ग्वाले कम्पीट करते हैं। कितने कोयरी कुर्मी कम्पीट कर रहे हैं, कितने पासवान इस साइड के कम्पीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप दे दीजिए। इसलिए हम चाह रहे हैं, हम एक इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस का एक पीएचडी स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं, जिसको हम देंगे। आप ढूंढिए, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। उसको हम ये टास्क देना चाहते हैं कि 1947 अमेरिका की एनआरआई देंगे सर आपको सर। अमेरिका क्या की अमेरिका की एनआरआई को देंगे सर, जो हाँ अमेरिका में है ये जी। हाँ, तो नहीं, हम उसको पब्लिश करने के लिए देंगे। हम ये चाहते हैं कि स्टैटिस्टिकली की जो है हमारा, देखिए हमारा क्या हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो रॉ डाटा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और जो दूसरी नौकरी बिहार सरकार की है उसमें से वो डाटा निकाल के उसको एनालाइज करे। एक तो हो गया कैटेगरी रीजन का, 3 रीजन में उसको बांटो। मगध रीजन 4 में बांट दो, मगध, भोजपुर, अंग और मिथिला, 4 में एक तो रीजन हो गया। अब आ जाओ 3 कैटेगरी, ओबीसी, दलित और सवर्ण, ये 3 हो गया। तो ये 2 लेयर का एनालिसिस करके दिखाओ तुम नौकरी में कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हम देखना चाह रहे थे। एक जबरदस्त पीएचडी का थीसिस है। कोई भी लड़का एक होशियार चाहिए हमको, जो अगर 4-5 पेपर इस पर आराम से पब्लिश कर सकता है, और उसकी हम पीएचडी की थीसिस उसको हम लिखवा देंगे। तो आप लोग ढूंढिए, कोई लड़का दीजिए हमको जो हमारा हाइपोथेसिस है उसको प्रूव कर सके डाटा के साथ, क्योंकि हम लोग तो साइंटिफिक वर्ल्ड में रहते हैं। अभी जो हम कह रहे हैं ना, ये दिस इज हाइपोथेसिस, हमारा है कि ऐसा हुआ है, लेकिन हम अभी कंफर्म तो नहीं कर पाते। तो ये है। तो बेसिकली हमारा कहना है कि इसमें सबसे ज्यादा तिरहुतिया, ओबीसी और दलित मार खाए हैं, जो उनको पता ही नहीं है कि लालू ने उनको कैसी दुलत्ती लगाया है। पूरा जनरेशन लाठी होते चले गए। हाँ, उनको पता ही नहीं है। सवर्ण लोग तो क्या है, मारपीट करके इधर उधर करके जैसे तैसे हम लोग कुछ न कुछ जुगाड़ कर लिए। उन लोगों के पास क्या हुआ, अगर वो नहीं कुछ कर पाए तो या तो कहीं कहीं लेबर का काम कर रहे हैं, या नहीं तो गांव में जाइए तो हम तो देखते, हम अपने पिछले ही साल गए गांव में, तो हमारा जो टोला है या हमारा अपना ही खानदान है, उसमें से एक भी लड़का अनएम्प्लॉयड नहीं था। मतलब सब लड़के, कोई सब बाहर में काम कर रहे हैं। बिहार में बहुत कम लोग हैं लेकिन बाहर काम कर रहे हैं, या सब एम्प्लॉयड है, पढ़ा लिखा लड़का। और एजुकेटेड ओबीसी है, का जो एजुकेटेड है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्निंग में है। हाँ, सब लड़का। और ओबीसी का लड़का सब जो है, देखे कि सब बैठा हुआ है गांव में। उसका हमको सबसे बड़ा दिन थे, संजोग से गांव में पहली बार 40 साल के बाद गए थे दुर्गा पूजा के टाइम में 2-3 दिन। तो जब हमारे टाइम की दुर्गा पूजा होती थी, तो हम लोगों का उस टाइम में जो है दुर्गा पूजा का जो एक्टिविटी यूथ लोग करता है ना, सब ड्रामा सामा, ये वो फल्ला चिल्ला, म्यूजिक, ये वो नाच गान। तो जो कॉलेज स्टूडेंट जो करते हैं, वो हम लोग जो कर रहे थे, वो ब्राह्मण कैथ राजपूत कर रहा था उस समय में। हाँ,
और अभी हम देखे चेंज कि अभी ये ओबीसी के हाथ में चला गया। ठीक है भाई, ये कोई बुरी बात नहीं है, वो लड़के। तो हमने पूछा ये क्यों है भाई? तो बोले कि जब गांव में सवर्ण का लड़का ही नहीं है तो कौन करेगा ये काम। वो लोग पोस्ट 2 के दिन लिए पहले पोस्ट के लिए है ही नहीं। एप्लीकेशन है ही नहीं। हाँ, नहीं तो है, और है तो है, लोग ही नहीं है। लोग हाँ। ही नहीं है। अब दूसरा चेंज क्या हो गया कि एक पहला का जमाना क्या था, हमारे टाइम में क्या था, लोग नौकरी यदि बाहर भी करते थे, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई में, तो सब लोग दुर्गा पूजा, दिवाली के पीरियड में छुट्टी के लिए गांव में आते थे। उसी तरह से हमारे मुलाकात हो जाए। अरे मल्लिक जी को नहीं तो हम कहाँ जानते थे मल्लिक जी को। मल्लिक जी जो है बचपन में जो पहली दूसरी ग्रेड में हम लोग साथ में पढ़े, उसके बाद वो निकल गए उड़ीसा, उनके पिताजी बैंकिंग नौकरी में चले गए। तो उनसे मुलाकात वही दुर्गा पूजा, दिवाली के टाइम में होती थी, नहीं तो होती नहीं थी। उसी तरह से दूसरे हमारे मित्र हैं श्रीनाथ ठाकुर, वो भी कलकत्ता में रहते हैं। तो मतलब ये होता था कि हम तो गांव में ही थे, लेकिन ये लोग बाहर वाले जितने थे लड़के फिर भी आते थे, तो मुलाकात होती थी हमारे जनरेशन में। साल में एक बार ही अब साल क्या में है, एक बार ही क्यों ना एक हो, बार मिलते थे जरूर। एक बार हाँ, मिलते थे जरूर। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग जाते ही नहीं। हमारा भाई ही है, वो जाता है, जैसे हम जाते हैं 4 साल 5 साल पर, वो भी जाता है गुजरात से 4-5 साल पर। बाय द वे, वो है, वो भी आप कल बता रहे थे आप लोग, क्या जीटीडी या क्या बोलते हैं उसको, गैस, जीएसटी, कौन सा टैक्स, जीएसटी। जीएसटी। जीएसटी, उसी में काम करता है वो। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसमें। वो पता नहीं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वहां पर क्या करता है, लेकिन एनीवे यस सर। लगता है वो टैक्स वालों को पकड़ता होगा ना, वो वो जो सेंट्रल टैक्स नहीं देने सेंट्रल वालों सेंट्रल गवर्नमेंट में है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट में है क्या सर? को। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में सेंट्रल है क्या? गवर्नमेंट के जॉब में है क्या? गुजरात। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में है वो, वहाँ पर गुजरात में, अहमदाबाद में। यस यस और यस मेरे यस। ख्याल में टैक्स इवेजन करने वाले जो होते हैं, उनको जब पकड़ने की बारी होती है तो इन लोगों को थमा दिया जाता होगा। यस 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 सर। उसका पुलिस फोर्स में था वो, मतलब पता नहीं इंस्पेक्टर ये वो फला चला था, उसे फिर होते हुए फिर प्रमोशन करके अभी उसको सुपरिटेंडेंट बना दिया है। तो धर पकड़ करने का काम करता है, जो लोग टैक्स की गड़बड़ी करते हैं उन लोगों को शायद। यस सर। हाँ, यस यस। लेकिन जैसे हम जाते हैं यहाँ से गांव में 4 साल 5 साल पर, वो भी ऐसे ही जाता है। और खास बात तो ये है कि जब हम जाते हैं गांव, तो हमारे बाद वो आता है, हमसे पहले निकल जाता है। दे हैव नो टाइम। दे हैव नो टाइम। गवर्नमेंट ये जॉब। तो है। गवर्नमेंट जॉब। पलायन का ये सिचुएशन है अपने यहाँ आजकल, कि मतलब लोग हैं ही, जाना भी नहीं चाहते हैं। अब ये स्थिति हो गई है, कोई अपने मूल स्थान में जो जहाँ बस गया वो बस गया, राइट, यही चल रहा है। यस यस सर। चलिए फिर, अब काफी हुआ टाइम, आज रोकते हैं यस नहीं यस सर। अब। यस सर। ओके। थैंक यू। ओके सर, ओके थैंक यू सर।